Good morning students, my name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in the last lectures we can discuss about the differential amplifiers, instrument tension amplifiers and the type of the filters. So differential amplifiers, we can see the differential amplifier is the one which responds to the difference between the two signals applied at its input and ideally reject those signals that are common to the two inputs. यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या कहते हैं कि जो दो अलग अलग इनपुट्स हम देते हैं उसको जो आइडेंटिकली है उसको कंसीडर करके दूसरा जो कॉमन है उसको रिजेक्ट कर देता है. सो द आउटपुट इक्वेशंस इज V0 इक्वल टू AD प्लस VCM where the AD means the differentials gain, the amplifiers, and the ACM is the common mode gain. So the CMMR यानी कि जो रिजेक्शंस पार्ट है, ठीक है, वो तो उसका इक्वेशंस है the is represent in the dB, so 20 log AD by ACM. So these are the differential amplifiers systems. So they have the first equations is the expressions for the output V0 यानी कि आउटपुट जो है उसमें इनपुट वोल्टेज आर डिफरेंस. अगर इनपुट वोल्टेज डिफरेंस हो तो यू कैन सी द फर्स्ट फिगर्स. सो आउटपुट वोल्टेज V0 इज गिवन. So V01 equations is R2 upon R1. Okay, now we can consider the integrated circuits. In similar way, the second figure you can see that if I consider the non-integrated circuit, at that time the equations V02 is equations 1 plus R2 by R1 into VA. So the VA is, you can see here, these are the node point. So these are the, we can find the R3 और इनपुट हमने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे सीरीज में R3 है. सो दी R4 upon R4 plus R3 into VI2. So these are the second differential voltage, input voltage. So if I find the values, so total voltage V0 equal to V01 plus V02, put the values, then from the equations is like this. हम अगर voltage divider rules can be determined हम कहते हैं तो then satisfactions selections R3 equal to R1 and R4 equal to R2. So simplify these equations. So finally the differential gain equations is the V0 upon VI2 minus VI1 is equal to R2 by R1. So these are the equations for the find the gain of the differential amplifiers. Now the second thing, if the output V0 where the input is common mode signals, अगर commonly हम apply करते हैं signals को, so you can see the figures. So the R1 is passing through the I1. So the I1 equations you can see that. Then after the output voltage can be found. So output voltage V0 you can see that the R4 upon R4 plus R3 VCM minus I2 by into R2. VICM यानी कि voltage of the common mode. So substituting the values of I2 equal to I1, then I1 finally V0 equal to these equations. So the common mode gain equations is V0 upon VCM is equal to R4 upon R4 plus R3 into 1 plus R2 R3 upon R1 R4. Now differential amplifiers when the input resistance RID find करने के लिए. So RID we can find this here. So assume the resistor are selected so that the R3 equal to R1, जैसे हमने आगे देखा था कि we can find the values is same. So the differential resistance RID equal to VID upon यानी कि differential voltage upon input current I1. So two input terminals of the op amps, the equations is VID equal to I1 R1
then I1 R1, so 2 times of I1 R1, so the RID equal to VID upon I1 into 2 R1. So what is the drawback of this? So in this differentials amplifier is required the two large differentials gain, and it is not easy to vary the differentials gain of the amplifier. अगर हम वैल्यूज चेंज करते हैं तो गेन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. So reduce this differential process error in instrumentation amplifier. So the low input resistance problem of the differential amplifier can be solved by buffering the two input terminal using the voltage. So which two? You can see the figures. The first one you can see that the buffer op amp, and then after the apply the differentials op amp. So these are the equations of the differentials gain, you can see here. Then after हमने देखा था कि integrator circuits. So integrator circuit is the circuit in which the output waveform of the integral output wave form. So these are the figures, and the equations is final equations is Vc in upon Vi V input upon R Cf into d by dt into minus V0, and if I given the integrations of the both sides, so the final equations you can see 0 1 upon R Cf 0 to t limits. हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ किया है बिकॉज दी रिड्यूस दी फीडबैक पाथ. देन आफ्टर द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, सो हमने देखा था कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्शंस फिल्टर्स एंड ऑल पास फिल्टर्स, एंड दीज आर द फिगर. सो इन दिस last lectures we can see this type of topic. Now the today's topic is introductions of the filters and active filters. So हमने लास्ट टाइम देखा था कि फिल्टर्स हमने देखा बैंड रिजेक्ट एंड लो पास. So what is the filters? So filter are the essential building blocks of the any electronics and communication system that alter the amplitude or the phase characteristic of the signals with respect to frequency. यानी कि फ़िल्टर हम जनरली फ़िल्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं. बेसिकली फ़िल्टर का फंक्शंस क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको फ़िल्टर करके हमारी जो मेन फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी कि आइडियल फ्रीक्वेंसी है, उसको उस टाइप की फ्रीक्वेंसी में या सिग्नल को कन्वर्ट करें. सो दिस इज़ द सिमिलर वे द फिल्टर इज़ वर्क इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एनालॉग सिस्टम्स. So the filter is basically a linear circuit that helps to remove the unwanted components such as a noise, interference and distortions from the input signals. अब noise है, interference है या distortions है. जैसे ही एक बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ कि टीवी के पास अगर हम मोबाइल रखते हैं तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आता है. अब नॉइज़, अब जब भी हम फ़ोन पे या मोबाइल पे बात करते हैं, जैसे कि लैंडलाइन है, ठीक है, तो उसमें कई बार नॉइज़ की वजह से क्या होता है कि सिग्नल डिस्टर्बेंस हो जाता है. सो दीज आर दी मेन इश्यूज़ इन आवर सिस्टम्स. सो उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं. सो आइडियली फिल्टर ऑल्टर द रिलेटिव एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स के द वैल्यूज़ ऑफ द सिग्नल्स जो जीरो से लेके मैक्सिमम होता है और वैसे ही जीरो से लेके नेगेटिव में मैक्सिमम होता है. तो दीज आर द टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरियस फ्रीक्वेंसीज component and the phase characteristic and is the gain depends entirely on the signal frequency. अब gain क्या है कि जो magnitude है उस पे depends होता है. So now the classification of the filters. So last time हमने देखा था उसके सब categories है, पर वो था active filters के. So now filter is mainly classified the two main types. The first one is the active filters and passive filters. What is the active filters? So active filter means the circuit which consists of the active component, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, op amp है, and in additionally to the resistors and the capacitor is called the active filters. एक्टिव फिल्टर्स में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं या op amp, एंड एडिशनली हम उसको
सर्किट को बैलेंस करने के लिए हम रजिस्टर या कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखे कि सभी ऑप-एम्प या ट्रांजिस्टर के साथ हमने रजिस्टर या कैपेसिटर की फीडबैक पाथ या इनपुट सर्किट में रखा हुआ है। तो दीज आर द एक्टिव फिल्टर्स। नाउ व्हाट इज द पैसिव फिल्टर्स? सो passive filter circuit which consists of the passive components such as the resistor, capacitor and inductor is called as the passive filter. passive filters यानी कि हम ट्रांजिस्टर या ऑप-एम्प या ऐसे कुछ भी कंपोनेंट यूज़ नहीं करते, जिस सर्किट में ओनली यूज दी मेन 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल component resistor, capacitor and inductor is called the passive filters. So now in this subject we can, in this topic or in these chapters, we can use only the active filters. So now the active filters की बात करते हैं. So what is the advantages of the active filters? The first one, due to the availability of the modern IC, the variety of the cheaper op-amp are available. अब जैसे ही अगर op-amp की वैल्यूज चीप होगी या सस्ता होगा, बट ऑब्वियसली कि जो मॉडर्न आईसी है वो भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और चीपेस्ट होगी. देन आफ्टर ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गेन इन द फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, द एक्टिव फिल्टर्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड. अभी क्या है कि हमने जैसे देखा कि ऑप-एम्प में हम गेन इजीली वेरी कर सकते हैं, सो फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से एक्टिव फिल्टर्स इजीली हम यूज़ कर सकते हैं. जबकि पैसिव फिल्टर्स में क्या होता है, हाँ हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर और वेरिएबल कैपेसिटर है, पर वो हमको जो आउटपुट एक्चुअली आउटपुट चाहिए वो नहीं दे सकता, इसलिए हम जनरली एक्टिव फिल्टर ही यूज़ करते हैं. सो द इंडक्टर आर एब्सेंट इन द एक्टिव फिल्टर्स, हेंस द मॉडर्न एक्टिव फिल्टर्स आर मोर इकोनॉमिकल. जैसे ही इंडक्टर इज द मोर कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट कंपेयर टू द रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स, सो दैट द एक्टिव फिल्टर्स में इंडक्टर यूज नहीं करते हैं. वी कैन ओनली यूज द रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स. एंड द लास्ट वन इज द ऑप-एम्प हैज द हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड द लो आउटपुट इम्पीडेंस. सो उसकी वजह से the active filter using the op-amp does not cause loading of the sources. Now active filters. So most commonly used as the active filters are low pass filter, high pass filter, band pass filter, band rejected pass filters, then all pass filters. And these are the you can see the फिगर्स. लो पास फिल्टर यानी कि जो वैल्यूज़ जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उतना ही पास होने देती है. अदरवाइज जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसा सेट किया है कि भाई 5 हर्ट्ज़, तो 5 हर्ट्ज़ के बाद वो स्टॉप हो जाएगा. इसी तरह का हाई पास एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द लो पास फिल्टर. देन बैंड रिजेक्शन फिल्टर्स, जितनी फ्रीक्वेंसी में जितने बैंड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे 0 to 10 है और हमको 5 to 6 में ही चाहिए, तो दिस आर दी बैंड रिजेक्शंस, बैंड पास फिल्टर्स. एंड बैंड रिजेक्शन फिल्टर जितना पोर्शन हमको नहीं चाहिए उतना हमको यहाँ पे सेट करना पड़ता है. तो दिस आर दी बैंड रिजेक्शन फिल्टर्स. ऑल पास फिल्टर्स मीन्स के सभी टाइप के फ्रीक्वेंसी ऑल सिग्नल को पास होने देगा. तो दिस आर दी ऑल पास फिल्टर्स. नाउ द सम डेफिनेशंस ऑफ द एक्टिव फिल्टर्स. द फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर फंक्शंस. ट्रांसफर फंक्शंस मीन्स which is the defined as the ratio of the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input, and it is denoted by the TS. You can see there. So replacing the variable by variable, यहाँ पे हमने S जो लिखा हुआ है वो फिक्स वैल्यू के लिए है. अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं
तो उसकी जगह से वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, यानी कि ZW, एंड वी गेट द फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शंस, and this is also represent the gain of the filters. So these are the equations of these are the transfer functions. Then after the pass band, so pass band means the band of the frequency for which the gain of the filters remain constant. So band of the frequency for which the gain of the filter remain constant, only it's allowed to pass the frequency called the pass band of the filters. यानी कि जितना बैंड की हमको पास जाना देना है वही हमको अलाउ करना है, तो दिस इज कॉल्ड दी पास बैंड फिल्टर्स. देन आफ्टर द स्टॉप बैंड यानी कि हमने आगे देखा था जो रिजेक्ट पार्ट करना है. So the band of the frequency for which the gain of the filter becomes almost zero, it stop the frequency to pass is called the stop of the filters. And last one is the cutoff frequency. The frequency of the filter where the filter changes the functions is called the cutoff frequency. यानी कि जहाँ पे फिल्टर रखा हुआ है वहाँ पे फिल्टर वो फंक्शंस को चेंज कर देता है, दिस इज़ कॉल्ड दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी कि हमने रखा है कि भाई 0 to 10 में 0.0 to 5 में हमको बैंड चाहिए, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने 0 to 5 रखा हुआ है, जैसे ही 5 पे आएगा वो स्टॉप हो जाएगा. तो दिस आर दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. नाउ स्टार्ट विथ द मेन टॉपिक. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर्स. बटरवर्थ जैसे ही हमने देखा कि फ़िल्टर्स में दो मेन टाइप्स है, एक्टिव फ़िल्टर, पैसिव फ़िल्टर्स. वैसे ही एक्टिव फ़िल्टर्स में सब कैटेगरीज है, यानी कि एक्टिव फ़िल्टर्स कैन बी रियलाइज एंड दी अदर क्लासेस ऑफ द फंक्शन सच एज दी बटरवर्थ, थॉमस, ट्यूरर एंड एक्सेट्रा. उसमें से जनरली हम बटरवर्थ फ़िल्टर यूज़ करते हैं. सो बटरवर्थ फ़िल्टर इज़ अप्लाइड फॉर द लो पास फ़िल्टर. तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है ये आपको GTU के क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है. एक्सप्लेन दी डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स एंड दी एक्सप्लेन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लो पास बटरवर्थ फ़िल्टर्स. सो स्टार्ट विथ द बटरवर्थ. सो हमने देखा कि इन लो पास फिल्टर्स is reject the frequency which are higher than the cutoff frequency. So it is allow the frequency lower than the cutoff frequency, hence called the low pass filters. So the Butterworth filter has a essentially flat amplitude versus the frequency response up to the cutoff frequency, so that the first order of the low pass Butterworth filter can be obtained from the basic low pass filters circuit using the RC filter network. So you can see the circuit of the first order low pass filters. So you can see the RC circuit, and this is called the one pole low pass Butterworth filter also. Here you can see that the resistance of RF, यानी कि feedback resistance, and the R1 is decide the gain of the filter in the pass band. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RF and R1 है वो gain डिसाइड करेगा. So now how to find the values of the output voltage, and this is called the analysis of the filter circuits. So using the voltage divider rules, applying the voltage across the capacitors is V1 minus JXC. JXC is the impedance of the capacitor.
and the xv is, we know that the 1 upon 2 pi fc. So equations is v1 is equal to minus gxc upon r माइनस gxc इंटू वी ई, यानी कि v1 जो है वो किस तरह से, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि v1 जो पॉइंट है उस पर कैपेसिटर्स है और रजिस्टर है. सो इक्वेशंस इज लाइक दिस, एंड जो jx की वैल्यू है, जैसे ही मैंने बताया कि वो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कैपेसिटर है, तो 1 upon 2 pi fc we know that, and the imaginary part so that jxc, यानी कि jxc जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे j का वैल्यू j है वो वेरिएबल कैपेसिटर की वजह से बताया हुआ है. सो फाइनल इक्वेशंस ऑफ द v1, यू कैन सी दैट द v1 इक्वल टू v in upon j 2 pi fc r प्लस 1. ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. नाउ बट अगर माइनस जे है, यहाँ पे हमने जैसे ही माइनस जे लिखा हुआ है तो माइनस जे को हम 1 बाई जे में कन्वर्ट कर देंगे, तो माइनस 1 बाई जे इज इक्वल टू जे ओनली, यहाँ पे जो जे है वो, सो दैट दी वी ए इज इक्वल टू, ये जो हमने इक्वेशन बताया हुआ है वो, यहाँ पे जो माइनस जे है उसको 1 अपॉन जे में मैंने कन्वर्ट करके माइनस 1 अपॉन जे में कन्वर्ट करके उसको 1 कर दिया है, यानी कि जे कर दिया है, इसलिए ये इक्वेशंस इस तरह से आ रहा है. नाउ द आउटपुट वोल्टेज V0, सो वी नो दैट, हमने अभी मैंने बताया आपको कि ये जो सर्किट्स में है उसमें फीडबैक रजिस्टर्स और R1 पे डिपेंड्स है. सो द V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 इंटू V1, यानी कि इनपुट रजिस्टेंस V1 पे डिपेंड्स है. जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे, ठीक है. सो उस पर डिसाइड होगा. सो पुट द वैल्यूज ऑफ द V1, V in अपॉन 1 प्लस J 2 पाई FCR. सो V0 बाई वी इन, जैसे ही हमको गेन फाइंड करना है तो जैसे हम कहते हैं V0 बाई वी एन इक्वल टू EF अपॉन 1 प्लस J 2 पाई FC, बट FH, okay, FH is equal to 1 upon 2 pi RC. Put the values in the V0 by Vn equal to AF upon 1 plus J F upon FH. So these are the, अभी हमने देखा कि EF, so where the AF is equal to 1 plus RF upon R1, जो A values है उसको बोलते हैं AF. EF यानी कि gain of the filter in the pass band, gain of the filters. Then FH is equal to 1 upon 2 pi RC. It means the high cutoff frequency of the filters, high cutoff frequency है. And the F is the operating frequency, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशंस में आपने दिखा AF, यानी कि AF है वो gain of the filter है, then after the A operating frequency and the cutoff high frequency. So these are the equations of the V0 by Vn forms. Now the V0, the gain magnitude and the phase angle can be obtained by applying the models so that our equations V0 by Vin, अगर हम मोड्स देते हैं तो AF upon under root of 1 plus F by FH square, so the angle phi is equal to minus tan inverse F by FH. Here the phase phi is the phase angle, कितना phase angle है. Now the equations describe the behavior of the low pass filter is, the first one is the very low frequency. अगर जो F by FH है, हमने यहाँ पे देखा कि F by FH है, उस पर डिपेंड्स है. अगर मैं द इक्वेशंस ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो वैल्यू इज V0 by Vn upon Vn equal to AF is constant, because
ए एफ है, क्योंकि एफ बाई एफ एच की वैल्यू मोर देन एफ से है, तो क्या होगा कि 1 वैल्यूज़ आ जाएगी, सो ए एफ होगा। नाउ एफ इज इक्वल टू एफ एच, एफ इज इक्वल टू एफ एच मैं कंसिडर करता हूँ तो वी ज़ीरो बाई वी एन इक्वल टू ए एफ अपॉन √2, यानी कि 0.0707 ए एफ, यानी कि 3 dB डाउन टू द लेवल ऑफ द गेन फ्रीक्वेंसी। इन द लास्ट वन, अगर में एफ इज वैल्यूज इज ग्रेटर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो ए एफ वैल्यू इज मोर देन द वी ज़ीरो बाई वी ई। ओके, इट मीन्स वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 0 to FH, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा। एट द लेवल ऑफ द एफ इज इक्वल टू एफ एच, अगर मैं एफ इज इक्वल टू एफ एच कंसिडर करता हूँ तो वी कैन सी दी values is 3 dB down to the level of the AF, and as the frequency increase the FH, the gain at the rate, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि 20 dB by decade होगा, यानी कि तो you can see the figures, the frequency of the FH is called the cutoff frequency and the break frequency is -3 dB. You can see here the -3 dB यहाँ पे कट ऑफ आएगा, so -3 dB frequency और द कंसर्न फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड द कंसर्न फ्रीक्वेंसी। तो दिस आर दी मेन, जैसे ही हमने देखा कि भाई यहाँ पे कट ऑफ आ जाएगा, सो इतना स्टॉप हो जाएगा, तो स्लोप इज द -20 dB डिकेड। सो दिस आर दी फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर्स। नाउ इन द सेकंड ऑर्डर लो पास filters, so in case of the low pass filter, it is always described that the gain roll off the very fast after the cutoff frequency and in the stop the band. So in this case the first order is roll of the cutoff is 20 dB, यानी कि हमने जो स्लोप देखा वो 20 dB का है। So in case of the second order the gain of the roll is the 40 dB. अगर मैं अभी भी मैं सिंक्रोनाइज यानी कि स्लोप की वैल्यूज़ जो है वो 20 से 40 कर देता हूँ तो हमारा सिग्नल मोर फिल्टर होगा। सो इसलिए हमने सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर किया है। सो द स्लोप ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्स आफ्टर द एफ इज इक्वल टू एफ एच इज -40 dB डिकेड, जैसे ना अभी बताया। सो -40 dB by decade for the second order low pass filters. So these are the circuits. Here the cutoff frequency fs for the filter is now decided by the R2, R3, C2 and C3. The gain of the filter is usually decided by the op-amp and the resistance is R1 and RF. तो गेन किस पे डिपेंड होगा? frequency feedback resistors and R1 पे. Now the equations for the analysis of the filter circuits, अगर हम कंसीडर करते हैं दिस वन, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी बताया कि किस तरह से इक्वेशंस नेटवर्क होगा। सो द लाप्लास डोमेन यू कैन सी द फिगर्स। सो फर्स्ट वन, I1 is dependent on the I2 plus I3. So what is the equations of the I1? So I1 is, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो I1 is dependent on Vin minus V1 upon R2 is equal to, in similar way the I2 is fine, I2 यानी कि इस नोड पे। So the V1 minus V0 upon 1 upon SC2 हमने लाप्लास में ट्रांसफॉर्म किया है इक्वेशन, प्लस इस नोड पे V1 minus VA upon R3. So these are the equations. Simplify these equations. VA equal to V1 into 1 upon S3, अभी यहाँ पे VA फाइंड करना है तो V1 into 1 upon S3 ये अपॉन R3 प्लस 1 upon S33 इज इक्वल टू
इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इक्वेशन इज V1/1 SR3 and C3. So final equations V1 equal to VA into 1 plus SR3 and C3. इसको मैं सामने ले गया तो मुझे V1 मिल गया. So solving for the VA we get, मैंने क्या किया, जो V1 है वहाँ पे इक्वेशंस VA into 1 plus SR3 and C3 पुटअप कर दिया ये पूरे इक्वेशंस में. Now simplify these equations. तो VA like these equations, ये मुझे यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू मिली. Now for the op-amp in a non-inverting configurations, so the V0 equal to AF/VA, where AF is the gain of the filter frequency. We know that the RF by R1, and VA is the voltage non-inverting terminals. So the V0 is equal to EF into put up the value of VA. Simplify this. So the order of the S यानी कि जैसे यहाँ पे तो सिर्फ S ही है, यानी कि सिंपल S है, फर्स्ट ऑर्डर है. अगर सेकंड ऑर्डर हो तो S² हो जाता है, S³ हो जाता है. So we can express in the equation the filter called the second order filters, and the standard form is V0 by Vin equal to, इसको मैंने क्या किया कि जो इक्वेशंस है वो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशंस बेसिकली AF/S² प्लस 2 रो ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा n² होता है. सो वेयर इज इक्वल टू overall gain, then rho is the damping of the system, On is the natural frequency of the oscillations. Now comparing these two equations, so On omega n² is equal to 1/R3 R2 C2 and C3. In case of the filter, अगर मैं filter consider करता हूँ तो this frequency is nothing but the cutoff frequency. So the cutoff frequency represent the H. So omega H² is equal to 1/R2 R3 C2 C3. So omega को हम 2 pi f में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं. तो 2 pi fH इसलिए है क्योंकि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. स्क्वायर इक्वल टू 1/R2 R3 C3. So the fH is equal to 1/2 pi under root of these equations. Now replacing S by J omega, जैसे ही मैंने बताया कि S by जो ओमेगा हम इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं. The transfer functions can be written in the frequency domain and hence final and can be expressed in the polar form is V0 by Vn is equal to V0 by mod of the V0 Vn एंगल फाई. अभी ये जो है हमने लाप्लास में ट्रांसफॉर्म किया है, पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है. देयर आर द टू मेन. इमेजनरी में क्या होता है कि एक वन पार्ट इज द स्केलर फॉर्म एंड अनदर वन इज द पोलर फॉर्म. हमने पोलर फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशंस रिप्रेजेंट किया है. तो V0 by Vn इक्वल टू AF/√of 1 plus f by fH raised to 4. सो दीज आर द 40 डिकेड्स सिस्टम्स. जैसे ही हमने आगे 20 डिकेड्स का देखा था, जैसे ही यहाँ पे -40 डिकेड्स, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम थी 3 dB. सो दीज आर दी सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर्स का इक्वेशंस है. नाउ वी कैन डिस्कस दी हाई ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर. सो once the first and second order of the filter are designed by concerning them the cascaded and any higher order filter can be designed. So higher order की बात करते हैं हम, हाई पास फिल्टर की बात करते हैं. तो as mentioned earlier, the high pass filter is the circuit that allow all the signals below the specified cutoff frequency and denoted by the FL. Thus the high pass filter perform the opposite functions to that of the low pass filter. मैंने जैसे ही आगे बताया था कि हाई पास फिल्टर है वो एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द लो पास फिल्टर की बिहेव करता है.
Hence, the high-pass filter circuits can be obtained by the interfacing that the high-pass filter circuits can be obtained by the interchanging frequency determining the resistance and capacitance in the low filter circuits. So, the first order high-pass filter can be obtained by interchanging of the element of R and C in the first order लो पास फिल्टर. अभी हमने रिप्लेस कर दिया है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रख दी है, जहाँ पे हमने जो आरसी की कॉम्बिनेशन से जहाँ पे आर था, जैसे हमने लो पास फिल्टर के सर्किट देखी थी, जहाँ पे आर था वहाँ पे हमने सी रख दिया है और जहाँ पे सी था वहाँ पे आर रख दिया है. सो द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज 0.707. हमने बताया जैसे कि 1/√2 था तो 707 times the gain of the filter pass is called the low cutoff frequency, and the all frequency greater the FL are allowed to the pass, but the maximum frequency which is allowed to the pass determined by the closed loop band. Now, analysis of the circuits in similar way, the minus j XE is the impedance of the capacitor, so the 1/2 pi f. So impedance is, you can see here, the minus j into 1/2 pi fc. xc मैंने बताया आपको कि impedance capacitance है. Now by the voltage divider rules is applied here. So the first equations VA equal to V in into R upon R minus j XE is equal to V in R upon here the minus j XE into, हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, so R upon R j XE plus 1. So taking the j XE is the outsides. So the अगर 1 upon minus j है is represent the j, we can write, क्योंकि वो जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा तो साइन विल बी चेंज. So we can write the 1 upon minus j XE is equal to j upon XE. So the j upon 1 upon 2 pi fc is equal to j 2 pi fc. So the equations, substituting in the above equations, so the equations VA equal to V in into, so final equations V in equal to j 2 pi f RC upon 1 plus j 2 pi f RC. So final equations of the VA इक्वल टू वी इन इक्वल इंटू, अभी ये जो है उसको हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है. सो F अपॉन FL इक्वल टू 1 प्लस जे यहाँ पे 2 पाई FC, जो FL इज इक्वल टू 1/2 पाई FC. सो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो द F अपॉन FL. Now for the op-amp is the non-inverting configurations. So the V0 equal to AF into VA. जैसे हम इक्वेशन जानते हैं कि VA is the voltage at the non-inverting input and AF is the gain of the op-amp in the pass band circuits. So 1/1 plus RF by R1. So V0 equal to, put the value of V in into, हमने जैसे आगे VA फाइंड किया है वो. Now hence the V0 by Vn equal to AF into, like these equations. Then after, the equations describe the behavior of the high pass filter. So there are the main three conditions again. At the low frequencies the F is less than the FL. At that time the V0 by Vn is less than the AF. उसमें क्या था, वैल्यू कांस्टेंट मिलती थी, यहाँ पे लेस देन मिलेगी. Now F is equal to FL, so the V0 by Vn equal to 0.0707 AF. जैसे ही आगे हमने देखा था लो पास फिल्टर में वही कंडीशंस, अगर सेम वैल्यू है तो 3 dB फ्रॉम द लेवल ऑफ द AF. अगर ग्रेटर देन है तो द हाई फ्रीक्वेंसी, सो 1 कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द F by FL फ्रॉम द डोमिनेटर्स. So V0 by Vn is approximately AF, यानी कि constant. So these are the high order frequencies. If any
questions regarding this topic, you can mail me. If any query regarding this topic, you can contact me. My contact number and the mail ID is in your screen. Thank you.